Hello children, today's topic is integer. What is an integer? Integer क्या है? Integer is a whole number inclusive of its positive and negative. Whole number क्या होता है? Whole number is a number which starts from zero. Zero से लेके it is infinitive. आपका end नहीं है. And what is an integer? Integer वो numbers हैं जो zero से positive numbers लेता है, जैसे +1, +2, +3 and like that, और negative भी लेता है. So if you go to the left of zero, it all starts with negative, -1, -2, -3, -4 and like on. Similarly, zero से आप जब right की तरफ जाते हैं तो it is all positive. So integer is inclusive of whole numbers, positive and negative. This is called integer. Yes, integer में और क्या नहीं include होते हैं? Integers में हमारे fractions include नहीं होते हैं. Like if I say 1/2, is it an integer? I would say no. -1/2, is it an integer? My answer would say no. तो हमारे integers में सिर्फ whole numbers रहते हैं, उसमें हमारा fractions include नहीं होता है और decimals भी is not a part of the integer. ये वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि integer. Now if you can see this number line has a 0 in between, in the mid of it, and there are numbers which is written on the right side, and there are numbers which is on the left side. Now the left side is all negative and right side of the 0 is all positive. So what you can say, these complete things is an integer. These are all positive integers, like you can say this is +1, +2, +3 and likewise it completely it's a positive, and the left of 0 is negative. So 0 and all these negative numbers are integers. But if I put a mid in between 1.1 or 1.2, then that is not an integer. Or if I say 3.5 in between, if I say this, then that is again not an integer. Alright, now what is that we will understand in the next chapter when we study about the rational number. So first आपको ये समझना जरूरी है क्लैरिटी के साथ कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो इंटीजर्स होते हैं जीरो से जितने भी होल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं और होल नंबर जो निगेटिव हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, so this is all about integers. Now I'll start with your first topic which is called as an addition of integer. Integers को हम add कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा है simple addition जो होता है, any whole number like 4 + 5, we say it as 4 + 5 is your 9. That's a normal. अभी यहाँ पे integers में आपको different signs के आएंगे. कभी आपको पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करना है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू सी. सो व्हेन देयर आर टू पॉजिटिव, एंड रिमेंबर दिस इज नॉट एन इंटीजर साइन, दिस इज एन ऑपरेशन साइन. नाउ व्हाट इज द ऑपरेशन साइन? द ऑपरेशन साइन इज योर addition. So this is the operation sign of addition. This is positive integer, positive integer. So when you are doing an addition of the same sign, remember positive added with positive, what you have to do is you just have to add these two with an addition because they are same sign, you need to add them. So add 25 plus 30, right? So that comes to as 55. So my answer for this is 55. Very easy, right children? Now moving on of addition. अगर मैं different sign का कर रही हूँ, now what does it mean different sign? Can you see this? This is -25 and this is +30. Now यहाँ पे different sign कैसे होगा कि 25 के साथ माइनस है और 30 के साथ प्लस है. तो जब आप एक निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हो, यहां पे आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. दिस प्लस इज एन ऑपरेशन साइन एज आई हैव एक्सप्लेन बिकॉज हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं. सो दिस इज अ साइन ऑफ एडिशन. रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द ऑपरेशन साइन एंड द इंटीजर साइन. So this is a +30 -25. You need to add these. So just because they are different sign, आपको पहले यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. Now if I say 25 and 30 का डिफरेंस कितना होता है? So that means 30 और 25 के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस होता है. That means you can do as 30 - 25.
इनका डिफरेंस कितना हुआ 5। पहले आपको यहाँ पे 5 लिखना है, देन यू हैव टू सी विच साइन इज बिगर आउट ऑफ दीज। सो -25, तो यहाँ पे 25 के आगे माइनस है, यहाँ पे 30 के आगे प्लस है। सो विच इज अ बिगर नंबर? इफ यू सी द ओनली द नंबर्स एक्सक्लूडिंग दिस साइन, तो द बिगर नंबर इज 30। 30 के आगे प्लस है, तो माई आंसर वुड बी प्लस। लेट मी टेक यू बैक अगेन टू दिस। अगर आपके डिफरेंट साइन है इंटीजर्स के, तो आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप लिख लेने के बाद यू हैव टू सी कि कौन से नंबर का विच नंबर इज बिगर, दैट नंबर इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल पुटिंग अ साइन। तो यहाँ पे 35 में प्लस है, सॉरी 30 में प्लस है, सो आप यहाँ पे प्लस डालेंगे। सो माई आंसर इज +5। आई टेक वन मोर नंबर, -50 plus 30. So this is a positive 30. Alright. This is -50 plus 30. What will I do? First I will take out a difference. So difference of 50 and 30 would be 20. So let's say 20. Now which sign will I put? Think about it. कौन सा नंबर है दोनों में बड़ा है? 50 बड़ा है या 30 बड़ा है? 50 बड़ा है. So what is the sign that I am having with 50? Minus sign. So my answer would be -20. So this is a very simpler way of solving this negative and positive integers. Okay. Now coming of the same sign, I have shown you the positive one. अभी मैं आपको दो नेगेटिव दिखाऊंगी, जैसे -30 plus -20. Now can you see? This is an operation sign. Don't get confused. This is an operation sign and these are the integer sign. -30 and -20. तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करने हैं. 30 and 20. Just add these. Because when they are of the like sign मतलब दोनों भी निगेटिव है, तब मुझे इन दोनों को ऐड करना है with the same operation addition. 50 और इसमें हमें माइनस करना है. When they are of the like sign, you just have to add these two numbers. When they are of different sign, आपको इनका डिफरेंस निकालना है और उसमें से whichever is a bigger number, that sign needs to be put here. So this is how we do the addition of integers of the same sign and of the different signs. So we'll practice it more in my next videos.